Jai Guruji. Anantam Shukrana Guru Maharaj for this beautiful, blessed, divine satsang. Last week we read chapter 27 of Rudra Samhita Part 3. In this we read that Shiva assumed the form of an ascetic or a Brahmin with matted hair, and he went to the place where Parvati was performing penance because he wanted to test Parvati's penance. Now there Parvati asked the maid, her friend Vijaya, to narrate her story to this Brahmin, and the Brahmin asked Parvati why was she performing such a severe penance, and who did she want as her husband. So after the maid narrated the story, the Brahmin said that he wanted to hear it from Parvati herself. So Parvati told the Brahmin that whatever Vijaya was saying was the truth, and that she knew that Shiva was unattainable, inaccessible, yet she was performing this severe penance to achieve Shiva as her husband. Now, hearing all this, the Brahmin said that he would be leaving, but Parvati requested the Brahmin to stay and guide her. So, at the request of Parvati, the Brahmin told her that what she was doing was futile, as Shiva was not an appropriate bridegroom for Parvati, because he completely discredited Shiva, and compared to Parvati, he said that he was not an appropriate bridegroom by citing examples that even Sati actually abandoned Shiva, and then he also wanted to deceive Parvati, so he kept telling more wrong things about Shiva, that Shiva burnt karma and he disrespected you by leaving you and going to another place. So all these things made Parvati angry, and she began to speak, and what she told the Brahmin is what we're going to read today. We will be reading chapter 28, that is Parvati sees the real Shiva form, and today Rima Aunty will be reading in English and Rachna Aunty will be reading in Hindi. Jai Guruji. Jai Guruji, Shukrana Guruji for this blessed seva. We are starting with chapter 28. Parvati sees Shiva real form. Parvati said, "So long I have been thinking that someone else has come. Now everything has become clear. You are a person who cannot be killed. O Lord, what has been said by you is known. It is not otherwise. If what has been said by you is real, it cannot be called unreal. Sometimes Lord Shiva is seen in that guise, but he is the supreme Brahma who, out of his own accord, takes up bodies in his own sports. You have now come in the form of a student, ascetic for the sake of deceiving me. Using false arguments, you have spoken fraudulent words. I know the real form of Shiva very particularly. I shall therefore explain Shiva's reality in the proper perspective after careful consideration. He is in fact devoid of attributes, but for some reasons he takes up attributes. How can he have a bird, he who is really attributeless but takes up attributes? Sadashiv is the support and receptacle of all laws. Of what avail is learning to him who is perfect and the Supreme Soul? At the beginning of the Kalpa, all the Vedas were given by Shiva to Vishnu in the form of breath. Who can be a good Lord equal to him? How can he be measured in age, he who is primordial to everything and everyone? Even primordial nature, Prakriti, is born of him. Of what avail is then energy to him? With the threefold energies, Shiva blesses those who worship him always as the Lord of energies. Every individual soul becomes fearless and conquers death by worshipping him. Hence his designation, the conqueror of death, is famous in all the three worlds. Vishnu attains and retains his Vishnuhood by his favor. Similarly, Brahma, his Brahmahood, and the gods, their godhood. Whenever the Lord of the gods wants to see Shiva, he has to propitiate his gatekeepers, the ghost, etc. Otherwise, his crown becomes shattered by batons. Really, Shiva is a great Lord. He has no need for many attendants. What is it that cannot befall one who serves the auspicious featured Shiva? What is deficient is that Lord,
Does Sadashiv like me? Even if a person is perpetually poor for 7 lives, after serving Shiva, his prosperity becomes unhampered. How can he find benefit inaccessible, he in whose presence the 8 siddhis, achievements, dance always for the sake of propitiation, with speechless mouths or with lowered faces? Although Shiva resorts to inauspicious things, yet by thinking on him, everything becomes auspicious. His worship fulfills all desires. How can there be aberration in him who always remains in an unmodified state? People are sanctified by merely seeing the person in whose mouth the auspicious name Shiva is ever present. If, as you say, the ash from the funeral pyre is unholy, how is it that the same transfer to Shiva's body is taken thence and worn on the head by the gods? How can he be easily realized, he who is the deity that creates, sustains, and annihilates the worlds, all the same who is devoid of attributes and is termed Shiva? The form of Shiva, the Supreme Soul, is that of Brahma, devoid of attributes. How can people like you know it? People with extrovert faces, persons of evil conduct, sinners, and those who have gone astray from the path of the gods do not at all know the reality of Shiva of attributeless form. If out of ignorance of his reality anyone were to discredit Shiva, his merit hoarded ever since birth becomes reduces to ashes. You have censured Shiva of immeasurable splendor, and I have worshipped you, hence I have become sinful. On seeing a person who hates Shiva, one should take bath along with one's clothes. On seeing a person who hates Shiva, one should perform expiatory rites. O wicked one, you profess knowledge of Shiva, but you should know that the eternal Shiva is not known at all. Whatever may be the form or feature of Shiva, he is multiformed. Still he is my favorite. He is without aberration and beloved of the good. Neither Vishnu nor Brahma can equal that noble soul. How can then the gods and others be? They are all always dependent on time and are not eternal. After realizing this with my sharp intellect factually, I have come to the forest and am performing the elaborate penance for attaining Shiva. My ambition is to attain the Supreme Lord, who is favorably disposed to his devotees and who blesses the distressed. Brahma said, after saying this, O sage, Parvati, the daughter of mountain, stopped and meditated on Shiva with unaffected mind. On hearing the words of the goddess, when the Brahmin ascetic began to say something, Parvati, whose mind was fixed on Shiva and who was averse to hear any disparaging remarks about Shiva, spoke immediately to Vijaya, her maid. Parvati said, this base Brahmin must be prevented strenuously. He is inclined to say something again. He will surely censure Shiva. Not only does he who disparages Shiva incur sin, but also he who hears the same. A person who disparages Shiva is definitely worthy of being killed by Shiva's attendants. If it is a Brahmin, he must be dismissed or the hearer shall go away from that place immediately. This wicked man will again disparage Shiva. Since he is a Brahmin, he is not to be killed. He shall be abandoned. He shall not be seen at all. Let us leave this place at once and go elsewhere. Do not tarry. Let there be no more talk with this ignorant man. Brahma said, saying this, O sage, even as Parvati was about to step ahead, the Brahmin, manifesting as Shiva, clasped his beloved. After assuming the handsome form in the manner Parvati had meditated upon and manifesting it to Parvati, Shiva addressed her while she stood with her lowered head. Shiva said, where will you go, leaving me? You are not to be discarded again by me. I am delighted. Tell me what boon shall I grant you? There is nothing that cannot be given to you. From today I am your slave, bought by you by performing penance. I have been bought by your own beauty. Even a moment appears like a yuga. O Parvati, O great goddess, you are my eternal wife. Let this shyness be eschewed. You please ponder with your keen intellect. O steady-minded one, you have been tested by me in various ways. Let my guilt be excused in following this worldly game. Even in the 3 worlds, I do not see a beloved like you. O Parvati, in every respect I am subservient to you. You can fulfill all your desires.
O beloved, come on near me. You are my wife, I am your bridegroom. I shall immediately go to my abode, the excellent mountain, along with you. Brahma said, when the Lord of the gods spoke in this way, Parvati rejoiced. Whatever distress she had felt during penance, she cast off as something old. O excellent sage, her weariness subsided. In fact, the fruit is realized. The exertion felt during the process of undertaking perishes. Shukrana Guruji, the chapter and finishing chapter 28. Rachna Aunty will read in Hindi. Jai Guruji. Jai Guruji and Shukrana Guruji for this seva. अध्याय 28 पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक जो मैंने यह समझा है कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया, आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म हैं, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण हैं, समस्त गुण जिनके सब रूपभूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वासरूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है, जो सबके आदि कारण हैं? उनकी अवस्था अथवा आयु का मापतोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षेप शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को और देवता देवतत्व को प्राप्त हुए हैं। शिवजी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा में यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें? यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र रहता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी कष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल हो जाता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता के भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता
तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सर पर कैसे धारण करते। अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भर्ता और हर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप से शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप जैसे बुद्धिमुख लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी है वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को ना जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे हे दुष्ट, तूने कहा था मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उस सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों न हो, उनके जैसे ही बहुसंख्यक रूप क्यों न हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टम देव है। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के सामने समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्वतः विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वह भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। तीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही शिव में आसक्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वालों का सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो नहीं है, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज भी किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चलो चलें, जिससे फिर कभी अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसे ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी इस युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। गिरिराज नंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझे दूसरी नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हूँ। प्रिय, मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं,
देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी ने आनंद मग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ, सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। अध्याय 28 समाप्त। जय गुरु जी।